Assalamualaikum, this is Naeem Khiyani from The Art of Investing. AI is changing the shape completely now. पहले हम डिस्कस कर रहे थे आज से 2 या 3 महीने पहले कि AI is changing the world और काफ़ी सारा जो है वो इन्वेस्टमेंट AI में हो रहा है, लेकिन अब AI की जो ऑडिट है वो is being on the surface right now क्योंकि investors are asking a question कि भाई if you are investing so much in AI, what is the outcome of it, right? And that's exactly what companies are getting into, जिसकी वजह से AI के stocks इस वक्त काफ़ी down हैं और आप अगर AI को follow कर रहे हैं तो there are a lot of companies, we'll discuss some of them today, और तो उनको follow करें क्योंकि things are very down right now, but it won't be till the end क्योंकि AI is समथिंग विच इज़ बीन ऑन द सरफेस राइट नाउ और काफ़ी लोग इस वक्त AI पे काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनीज एनवीडिया, एप्पल, ओपन AI, whoever is working on the AI infrastructure and AI systems altogether, there has been a question कि there are a lot of revenue, there are a lot of investments you have put together on AI, what is the outcome of that? So that's what we are going to discuss it today. स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। जो एक इस वीक की जो ख़ास बात रही वो ये रही कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मिडल ईस्ट ने पुश किया ब्रेंट क्रूड ऑयल को अबव 100 पर बैरल। 77 तक आ गया था ये लास्ट जो जब नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई एंड थिंग्स वर गेटिंग इनटू द राइट शेप, बट नाउ इट्स अबव 100. So that's what is going to shift the market a lot और स्टॉक एक्सचेंज में अगले हफ्ते से आपको एनर्जी सेक्टर में जो है वो चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। फेडरल शिफ्ट इस वक्त एक सरप्राइज मिल रहा है, -0.4% मंथ टू मंथ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, दैट्स व्हाट दे आर गेटिंग इट क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है यूएस एंड कनाडा की, कनाडा में इतना ज़्यादा भी इम्पैक्ट नहीं आया लेकिन यूएस में काफ़ी आ रहा है. That is causing a lot of uncertainty right now and due to which एक डिबेट चलना शुरू हो गई है कि क्या सितंबर में जब नया रेट कट जो है वो डिस्कस होगा, सो आर दे गोइंग टू कट द रेट्स और दे विल कीप द रेट एज इज, क्योंकि इस वक्त 4.7% पे जो है वो यील्ड जंप इन हो गया है ट्रेजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ अ लॉट. सेकेंड जो सितंबर रेट हाइक की जो मैं आपसे बात कर रहा था कि दैट इज़ वेयर द एक्सपेक्टेशन गोज इन कि वेदर अगर ये रेट हाइक हुई सो इन्फ्लेशन जो है वो इज़ गोना हिट टू द रूफ एंड दैट्स द प्रॉब्लम फॉर यूएस राइट नाउ. इस वक्त काफ़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कुछ इम्बैलेंस चल रहा है इस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वन ऑफ द थिंग इज़ एनर्जी सेक्टर, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो so you need to understand that things are not the same as it was for past 6 months. जब जो है वो ईरान और यूएस की जो एक जंग छिड़ना शुरू हो गई उसके बाद नेगोशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, तो जो ऑयल की एनर्जी प्राइसेस हैं दैट वाज गोइंग अप एंड डाउन एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन getting into energy sector, keep an eye on it and be very 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 careful if you go to do that. अच्छा जी, ओवरऑल मार्केट इंडेक्स हम देखते हैं. नैस्डैक अप्रॉक्सीमेटली सबसे वीक रहा. नैस्डैक इस वक्त -2.3% जो है वो गिरा. S&P 500 वाज -0.8% और डाउ जोन्स इज लाइक -0.5%. जो चिप स्टॉक अंडर प्रेशर, और जी जैसे कि मैंने कहा कि AI जो है काफ़ी लीड कर रहा था काफ़ी अरसे तक, लेकिन नाउ इट इज़ अंडर प्रेशर राइट नाउ क्योंकि AI के काफ़ी जो टेक स्टॉक्स हैं दे आर पार्ट ऑफ नैस्डैक, और अगर आप -2.3% देख रहे हैं नैस्डैक की ओवरऑल एवरेज रेट, तो दैट्स ड्यू टू टेक स्टॉक्स विच वी आर सीइंग राइट नाउ. इन्फ्लेशन वर्सेस यील्ड, जून जो होलसेल एंड कंज्यूमर इन्फ्लेशन नंबर जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया दैट इज़ बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट, और $100 के ऊपर जो क्रूड ऑयल जा रहा है दैट इज़ गोइंग टू ड्राइव अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू पैनिक. अभी हम कनाडा की बात करेंगे क्योंकि टैरिफ जो है वो अगर अगस्त 19 से 50% टैरिफ जो है कनाडा में इम्पोज हो जाएगा तो ऑटोमोबाइल और डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर गोइंग टू बी गेट इम्पैक्टेड एज वेल. ओके जी, यूएस मार्केट इन डिटेल क्या हुआ. AI स्पेंडिंग अंडर द माइक्रोस्कोप एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वर सेइंग. डिफरेंट क्वेश्चंस आना शुरू हो गए कि व्हेन विल दीज इन्वेस्टमेंट्स जनरेट रिटर्न्स.
Alphabet reported किया है कि stronger quarter उन्होंने लिया है, but investors are focused on the company's enormous AI capital expenditure. हमने देखा Google ने काफ़ी चीज़ें जो है वो AI के हवाले से लॉन्च की हैं, and they are keep launching it, and they are giving a lot of hard time to OpenAI due to different tools which they made it for free. अच्छा जी, the shift in thinking triggered a broad sell-off across many AI-related stocks, and that's exactly what we are saying. China has come up with their own AI model, which is called KIM, or that is driving OpenAI crazy right now, क्योंकि उन्होंने काफ़ी उसको cheap करके जो है वो market में लाए हैं, and they have 1 trillion pointers for AI, which they can go and they can search and hunt for it. So that's the biggest one to look into. Oil prices return above 100. ये एक major जो है theme बनी है energy के point of view से. Higher inflation, higher oil prices means higher inflation or higher interest rate for longer, and that's exactly what we are seeing. So if you are getting into the energy stock, be very careful to do that. Biggest winners is we consider Intel जो है, क्योंकि they have surprised stronger than expected revenue, और revenue के point of view से they have approximately increased 25% year over year, and the company's fastest growth more than a decade. So because Intel chips के point of view से is been getting into a different ball game altogether. Apple is another one who got the biggest winner there. An investor continue to viewing Apple as one of the safest and larger cap technology investment, क्योंकि Apple हर 6 और 8 महीने के बाद अपना एक नया फ़ोन का वर्जन लॉन्च करता है, and due to which they are getting a huge market share about it, and that's where it's getting into a different zone right now. जो biggest loser रहे Tesla, they lost roughly 15% of disappointing quarterly results and continued concerns over profitability. Similarly, Alphabet, they declined more than 6% due to AI spending, and there are a lot of questions being asked. टेस्ला की बात करते हैं तो SpaceX का IPO लॉन्च हुआ था आज से 4 हफ्ते पहले. When IPO got launched, it was launched at around 152 USD, and it went up to $215 right away in next few days. टेस्ला का SpaceX का IPO और हमने जिक्र भी किया था very early कि it doesn't have a back behind it. अभी आज जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त SpaceX अपना एक टेस्ट कर रहा है रॉकेट. तो इन द केस इफ दैट टेस्ट गेट्स सक्सेसफुल देन SpaceX विल गो अप टू द रूफ एज वेल. इस वक्त SpaceX चल रहा है $112. सो फ्रॉम 215 डाउन टू 112, सो मोर देन $100 का इनका जो है वो लॉस हुआ है पर शेयर. बट इफ एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है कि इट गो बिलो 100 in anyways, and then it will jump. So if you are looking at the SpaceX, my recommendation, do not jump in, but you do your due diligence as well. Just keep an eye on it and see when to kind of get involved in that particular stock. Acha ji, TSX market, Canadian market continues to be a global standout. कैसे रही global standout में? Due to heavyweight in energy and resources. All time जो record हुआ इसका S&P TSX composite hit around historical hit time of 35,000 points before trimming slightly closer to the week, which was 35,192, and roughly 11% जो है gain हुआ है TSX को. बैंक ऑफ कनाडा होल्ड 2.25% इंटरेस्ट रेट, नहीं चेंज किया है कुछ भी, वैसे ही रहा है. तो आपकी जो कनाडा की इन्फ्लेशन है दैट इज गोना रिमेन एज इज एज वी आर सीइंग इट राइट नाउ, बट स्टिल द इकोनॉमिक सिचुएशन फॉर कनाडा इज नॉट दैट गुड एट दिस पॉइंट. Overall performance, Canada markets prove more resilient than Wall Street, और यही हमने देखा है कि अगर Wall Street में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज आ रहा होता है, बट Canadian market जो है remains silent and remains good in that way. Our composite index traded around 35,281, ending the week modestly higher than Friday. और टेक्नोलॉजी स्टॉक यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, लेकिन हमारी रियल स्टेट एंड फाइनेंशियल की जो स्ट्रेंथ है that's offset technology, and that's the two major industries which we are relying on. Okay जी, supported क्या रहे TSX को? Financial, as I mentioned, Canadian banks continue providing stability along with large financial companies such as Power Corporation and Onex posted solid gains
and that's how we have seen. TD grows a lot, along with real estate. After weakness earlier in the week, real estate shares are planning to get recovered क्योंकि जो है चीज़ें stabilize हो रही हैं slowly and gradually, but it will take a little while, take a little time. So Colliers International, First Service, and Altus Group, they are the one who helped and boost the sector. Gold prices remained relatively stable despite geopolitical uncertainty, or mining companies posted modest gains, preventing further downside in the TSX. अभी गोल्ड की बात करते हैं. गोल्ड का एक ओवरऑल आइडिया हमने लिया कि पिछले 3-4 महीनों में gold has been the fastest growing and fastest losing commodity, right? So that's what we have seen so far. China had stopped trading in gold, so China is getting into the physical buying of gold right now. और जो ट्रेडिंग जब स्टॉप हुई चाइना के प्लेटफॉर्म से, तो देयर इज़ एन इम्पैक्ट व्हाट वी आर सीइंग, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ कि गोल्ड इस वक्त 4000 के ब्रैकेट के आगे पीछे ही घूम रहा है. अब गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड की जो स्पॉटलाइट है बैटलिंग द 4000 फ्लोर, और इस वक्त जो एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है कि क्रिटिकल फ्लोर 4000 जो हमने देखा अभी, राइट, और अगर ये 3964 से नीचे गया गोल्ड, so it's gonna hit 3500. That's what the analysts are predicting from the technical perspective. First resistance जो है वो 4069 का है to 4079, और second जो है it is around 3500. अगर उसने resistance को cross कर लिया, it goes up, then it will go up to 4150, and that's what we are seeing right now. Safety net है gold के point of view से, because central bank buying more and historically aggressive, with 45% of central banks planning to add more gold to reserve over next 12 months. So एक जगह पे हम ये देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक जो है वो गोल्ड ज़्यादा बाई कर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड जो ट्रेडिंग है दैट इज गेटिंग इनटू अ डिफरेंट शेप. करंट प्राइस एज आई सेड गोल्ड की 4028 है एट दिस पॉइंट, और ये 4000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्लोर पे है इस वक्त. कभी भी ब्रेक हो सकता है बेस्ड ऑन हाउ इट वर्क्स, बट कीप एन आई ऑन इट एंड लुक फॉर इट. और गोल्ड की मैं आपको जो है वो बार बार आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ कि यू डोंट हैव टू गेट इनटू द फिजिकल गोल्ड. वी इफ यू कांट अफोर्ड इट, वी हैव ETF for gold, and I'm going to show you right now, and we have a stock for gold जो आपको जो है वो गोल्ड के पैरेलल चलता है, and then you can easily buy that one. So let me share with you. So इस वक्त इसकी प्राइस है $371.95. You can see the graph, it goes up and it's going down. It's a 5-year 5 साल का ग्राफ है, लेकिन अगर एक मंथ को देखें, so that's exactly what we are seeing in past month. Okay, it goes up, goes down, and it goes in different way. कोई set momentum नहीं है गोल्ड का, whether it is going up or whether it is going down. It goes in sideways right now for past month. अच्छा जी, उसके बाद ETF जो मैंने गोल्ड का आपसे साथ जिक्र किया था, यू कैन गेट इन्वॉल्व इन ETF एज वेल. इट इज़ राइट नाउ एट $46.80. अगेन अगर मैं इसका एक मंथ का आपको चार्ट दिखाऊं तो इट गोज लाइक दिस अप एंड डाउन, एंड दैट्स बिकॉज द गोल्ड इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल एट दिस पॉइंट. So as we are here, I would like to show you a couple of other stocks as well. So इस वक्त हमारे पास मैं अपनी वॉच लिस्ट भी देख लेता हूँ. हाँ, इस वक्त हमारे पास जो टोरंटो डोमिनियन है, इट इज़ $169 का स्टॉक इस वक्त है मार्केट प्राइस 169 पे. इट वेंट अप टू 175, लेकिन इट्स 169. उसके बाद एयर कैनेडा को हम देखते हैं. राइट नाउ एयर कैनेडा इज़ एट $23.27. एयर कैनेडा को अगर आप यहाँ देखें, एयर कैनेडा वॉज 3 months अराउंड, एयर कैनेडा वॉज एट $18, somewhere around, yeah, $18.01, and it went up. एयर कैनेडा का मैं आपको हर दफ़ा इसलिए जो है वो स्टॉक दिखाता हूँ क्योंकि एक साइकिल चलता है एयर कैनेडा का, एंड दैट्स द साइकिल फॉर एयर कैनेडा टू कम डाउन, और ये फिर वापस जनवरी फरवरी में इज़ गोना पिक इट अप. सो दैट्स द साइकिल व्हाट एयर कैनेडा गोज इन, एंड दैट्स व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड. एम्ब्रिज इस वक्त है, अगर मैं एम्ब्रिज को देखूँ यहाँ पे, या CSS एनर्जी सोल्यूशन इज $12.26, और एम्ब्रिज इस वक्त है $80.21 पे, बिकॉज ऑफ एनर्जी सेक्टर इज ग्रोइंग हियर इन कैनेडा, एंड यू आर सीइंग एम्ब्रिज इज सपोर्टिंग ऑल दैट.
So this was it, folks. So thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Khiyani. हमने काफ़ी जो है वो जिक्र किया गोल्ड के हवाले से. कीप वॉचिंग गोल्ड, क्योंकि गोल्ड इस वक्त एक ऐसी वॉलेटाइल इंफॉर्मेशन पे चल रहा है कि इट मे गो अप, इट मे गो डाउन, बट थिंग्स आर गोइंग इन अ प्रॉपर शेप बिकॉज ऑफ not that much pressure from the east side of it. So thank you so very much. Inshallah, we'll see you in the next episode. Assalamu alaikum. TD Mosaic Festival is back for 21st year, July 31st and August 1st at Celebration Square, Mississauga. The biggest South Asian artist lineup of the year. Sufi queen Sanam Marvi from Pakistan. Indian Idol Season 14 winner Vaibhav Gupta from India. Delhi to Dublin from Vancouver. Shalom Zavier's Fusion. Ali Kazmi, Bollywood Dance School, Canada. Jadoo Entertainment, Rising Star finalists and the 2026 star. Popular South Asian restaurants and food trucks, Vendors Bazaar, Visual Arts, Media Arts, free children arts and balloon making workshops, children's Mardi Gras parade with marching band, completely free admission for the whole family. For more information, visit mosaicfest.com. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं. आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं. एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ. मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स. कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. Are you suffering from anxiety, depression, or chronic pain and unable to work? Has your LTD claim been denied? Do not suffer alone. We can help. Alam Law, your trusted disability lawyers. BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summerfest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, featuring rock stars Ali Azmat and Mustafa Zahid on August 22nd. Day 2 brings you unforgettable Qawwali Night by Sur Sagar on August 23rd, alongside an incredible lineup featuring over 45 talented Canadian artists with free parking and free admission at Ajax Downs, 50 Alexanders Crossing, Ajax, Ontario. Enjoy kids' activities and indulge in delicious South Asian cuisine. For sponsorship or vendor opportunities, visit www.bmkevents.ca or call 416-897-1683. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summerfest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, featuring rock stars Ali Azmat and Mustafa Zahid on August 22nd. Day 2 brings you unforgettable Qawwali Night by Sur Sagar on August 23rd, alongside an incredible lineup featuring over 45 talented Canadian artists with free parking and free admission at Ajax Downs, 50 Alexander's Crossing, Ajax, Ontario. Enjoy kids' activities and indulge in delicious South Asian cuisine. For sponsorship or vendor opportunities, visit www.bmkevents.ca or call 416-897-1683. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. TD Mosaic Festival is back for 21st year, July 31st and August 1st at Celebration Square, Mississauga.
the biggest South Asian artist lineup of the year. Sufi queen Sanam Marvi from Pakistan, Indian Idol season 14 winner Vaibhav Gupta from India, Delhi to Dublin from Vancouver, Shalom Zavier's Fusion, Ali Kazmi, Bollywood Dance School Canada, Jadoo Entertainment Rising Star finalists and the 2026 star. Popular South Asian restaurants and food trucks, Vendors Bazaar, Visual Arts, Media Arts, free children arts and balloon making workshops, children's Mardi Gras parade,